Welcome to the last episode of the Kerala series where we'll be exploring some of the best coastal roads and beaches that the state has to offer. So sit back and get ready to immerse in true vacay vibes. In this episode, I'm traveling from Alleppey to Varkala where I will be taking you along with me on my first surfing lesson and a lot more. एंड वारकला जाने के लिए मैंने एलेपी से ट्रेन ली सो दैट आई कुड कट डाउन ट्रैवल टाइम और 2 घंटे में आई रीच्ड वारकला. वारकला स्टेशन पे आपको ऑटो बाहर ही मिल जाएगी, बट डोंट फॉरगेट टू बार्गेन फॉर अ गुड प्राइस फॉर योर राइड. जैसे ही I left on the roads of Varkala, I could already feel a difference in the breeze. It was salty, just like in any beach destination. And in no time, I reached Goofy Foot, which is my stay for the next 2 days. Hey guys, what's up? Welcome to the last episode of the Kerala series at Talking Travel. If you guys have been with me until here, आपने सारे 5 एपिसोड इसके पहले के देखे हैं, then thank you so much and I really hope कि आपको सारे एपिसोड्स देख के बहुत मज़ा आया हो. At least virtually ऐसा लगा हो कि आपने भी केरला मेरे साथ घूम लिया हो. In case you haven't been able to visit the state of recent or have always wanted to. Anyway, इस एपिसोड में माहौल थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि I am in Varkala, which is known for its beautiful, gorgeous beaches. And that's one of the key reasons कि मुझे वारकला आना था. I wanted to end this trip on a very, on a very different sort of a note, on a very relaxing, on a very calming sort of a vibe. And I thought कि वारकला से better कोई जगह हो नहीं सकती. तो अभी फ़िलहाल मैं मेरे shack में आ गई हूँ. Basically it's a resort, but it's a surf shack. And that's the key reason why I chose this resort as my stay option. जैसे कि आपने notice किया होगा हर जगह पे, especially यहाँ पे ये केरला सीरीज़ में जितने भी मैंने stay options choose करे थे, all had something very unique to offer. There was What I love about the shack is कि इन्होंने अपने surfing theme को बहुत ही beautifully अपने interiors में भी inculcate किया है. Everything you see around is shaped as a surfboard that makes you feel even more closer to the whole beachy vibe. There are pretty blue cottages with rooms, and here's mine. I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling. Alright, so मैं गूफी फूट से अभी बाहर निकली हूँ. एक और चीज़ विद रिगार्ड्स टू फूड, तो अगर आप गूफी फूट पे रह रहे हो तो इसके ये गली में से निकल के ही ऑपोजिट यहाँ पे देयर इज़ दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड इज ब्लू वाटर वेयर यू कैन प्रॉब्ली गो टू ईट, यू कैन प्रॉब्ली ग्रैब ब्रेकफास्ट और समथिंग. सो द प्रॉपर्टी डज ब्रेकफास्ट एंड डिनर्स. लंच नहीं करते यूजुअली क्योंकि दैट्स द टाइम जब सब लोग वैसे भी सर्फिंग के लिए गए होते हैं, बट अदरवाइज यू कैन जस्ट कम टू ब्लू वाटर. कभी कभी प्रॉपर्टी में वो लोग रात को बारबेक्यूज़ वगैरह भी करते हैं, सो इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हेन यू आर हियर, बट अदरवाइज इफ यू कांट फाइंड एनीथिंग, so blue water is the closest option, but this is not the only option. There are a lot of beautiful cafes in Varkala. तो अभी मैं भी actually कैफ़े ढूंढ ही रही हूँ. मैंने कुछ कैफ़ेज़ बुकमार्क करके रखे थे, तो let's see अगर मुझे वो कैफ़ेज़ मिल गए पास में हुए, then we'll probably go and grab something to eat over there. पता है जब एजेंडा पे कुछ नहीं होता तो इतना कामिंग, रिलैक्सिंग और अच्छा फील होता है. मुझे एक्चुअली आज बड़ी टूरिस्टी फीलिंग आ रही है जहाँ पे आई डोंट हैव लाइक एन एजेंडा कि यहाँ पे ये टाइम पे पहुँचना है, ये शूट करना है, ये करना है. ऑब्वियसली शूट तो करना ही है बिकॉज आपको आई रियली वांट टू शो यू गाइज हाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग वारकला इन माई ओन वे, बट आई एम जस्ट टेकिंग इट स्लो वन एट अ टाइम. एंड जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, मैं ब्लू वाटर का मुझे वाइब इतना अच्छा लग गया तो मैं यहीं पे बैठ गई. आइडियली मेरा प्लान ये था कि मैं क्लिफ तक चल के जाऊँगी और फिर वहाँ पे आई फाइंड अ कैफे टू सिट एट एंड हैव ब्रेकफास्ट, बट दिस वाइब वाज so amazing that I just sat over here itself to have some breakfast. And
and I'm literally just sitting by the beach. I'm sure you guys can hear it right now. It's just look at this. The vibe at Blue Waters is unmatched because of its close proximity to the beach. यहाँ का खाना और कॉफी तो अमेजिंग है ही, और आप यहाँ घंटों बैठ सकते हो just hearing the waves crash. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling down. After my breakfast, I left to walk towards the popular Varkala Cliff. वो जो सामने आपको दिख रहा है, that is the route from Blue Waters restaurant itself. वहाँ से चल के ही क्लिफ तक पहुँचा जाता है. तो मैं I'm just walking that way. बीच में there's like a small outlet towards the beach. So if you want to go, you can go spend some time here, or you can just continue to walk straight. Me being me, I'll obviously go a little bit here. वैसे हल्की हल्की बारिश आना शुरू हो गई है, तो हम अभी फ़िलहाल छाते में ही खड़े हैं. But देखते हैं. Let's just go a little closer to the beach once for like 2 minutes probably, and then we will walk this way towards the cliff. A kind passerby was helpful enough वो वाला तो क्रॉस हो चुका था, बट ये कैसे क्रॉस होगा? Look at this, there is like this rivulet of sorts which is flowing all across, और ये इतना मोटा सेक्शन है. It doesn't even narrow down somewhere, it just goes directly into the beach. So I am trying to find a way कि मैं इसको क्रॉस करके इस तरफ जा सकूं. The cliff is somewhere over there. I guess I can maybe get my feet a little wet and just climb up from here. Let's see. बह के आ रहा था. Oh my god, this is what it looks like. इसके बीच से मुझे जाना है, और ये बीच है. I have no idea how I'm going to cross this. There's a man over there. Let's see. I might try and ask for his help to give me a hand or something. I don't know. Let's see. So I'm going to try walking through the water and going. Oh my god, this is like an adventure that I was not prepared for. अच्छा हुआ मैंने चप्पल्स पहने. I was planning on wearing my shoes. But oh my god, there are huge waves coming. So basically, बड़ा वेव आए उसके पहले मुझे उस वेव को डॉज करके जाना है, because जब वेव आता है तो बहुत नज़दीक तक पानी आ जाता है. I don't want to really get that wet. Let's try. Okay, this is the area of the crossing. Oh my god, the sand is so damn soft नीचे कि मेरे पैर उसमें अंदर जा रहे हैं. I'm stuck because my chappal is not. Okay, thank you. Okay, welcome. क्योंकि मैंने चप्पल पहना था, पानी का डायरेक्शन ऑपोजिट आ रहा था और मेरे चप्पल अटक गया था. अगर मैं खुद से निकलती तो चप्पल चले जाते. सो आई हैड टू गेट सम हेल्प, एंड एज यूजुअल पीपल आर रियली हेल्पफुल हियर, सो थैंक्स टू देम. क्लिफ की तरफ चलते चलते आपको रास्ते में कई नज़ारे दिखेंगे, जैसे कि men who are fishing, the beautiful palm-lined patches, and some adventurous fun pathways. Nearing the cliff, आपको lined across this entire path you will see like a number of resorts, all beach facing resorts, and a number of cafes. जो resorts है उन्हीं के खुद के cafes भी है. मेरे पीछे एक resort है यहाँ पे, बहुत ही beautiful लग रहा है यहाँ से, and it is literally just facing the beach here, and it has a very cool cafe. It's called as Black Beach Cafe. So the place in general only has like a super cool vibe. बड़ा गोवा वाला vibe आता है. When you are walking through those narrow lanes just by the beach, और कितने सारे shacks होते हैं वहाँ पे, home stays होते हैं, hotels होते हैं. This looks pretty much just like that. Also one more thing that I've noted is कि यहाँ पे बहुत सारा foreigner crowd है. तो
अब तक के जितने भी एपिसोड्स थे, जो 5 एपिसोड थे, जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवल करा, वहाँ पे लोकल्स बहुत सारे थे, उसी जगह के लोकल्स थे बहुत सारे. बट दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे मुझे बहुत सारे फॉरेनर्स दिख रहे. देयर आर पीपल फ्रॉम द इंग्लैंड, देयर आर पीपल फ्रॉम स्वीडन, देयर आर पीपल फ्रॉम रशिया. बहुत सारा फॉरेनर क्राउड है. दे जस्ट लाइक चिलिंग अराउंड एंड yeah, so it's quite a nice vibe. It's a very different vibe, I would say. In Kerala itself, it's such a different and such a nice vibe. I'm so glad कि मैं यहाँ पे आई. This is like a complete change of scenery, change of perspective. So let's go. Cliff अब थोड़ा ही नज़दीक है, so this is the way up. Let's go. और बस वारकला क्लिफ पर खड़े होकर अपने नीचे बीच को देखने का मजा मैं एक्सप्रेस कर नहीं सकती. I'm sure you'd be able to gauge from these clips here. क्लिफ पर आपको नॉर्थ क्लिफ मार्केट भी मिलेगा, where you can shop for hippie outfits, या फिर मेरी तरह किसी हिप्पी कैफे को ढूंढकर टाइम स्पेंड कर सकते हो. मैंने जोश में आकर क्लिफ तक वॉक तो कर लिया, बट इट टुक मी 30 minutes and I wasn't going to walk all that way back. So Goofy Foot से मैंने शफीक को कॉल किया and he came to pick me up. Well, I was just resting in my room for a while and अभी मैं बाहर निकली हूँ. मैं वापस ब्लू वाटर जा रही हूँ just to sit down and have a cup of coffee and enjoy a beautiful sunset. Alright, so it looks very very beautiful. From my room it was looking really nice. So मुझे लगा मैं at least by the beach जाके ही बैठती हूँ, इसीलिए I'm just walking towards blue water once again. I'm really great कि ये एक छोटा सा कैफ़े है इस लेन में, so that you can it's like a very quick proximity if you want to go and enjoy and spend some time by the beach. वरना बाकी जो भी cafes है are quite a little bit of a walk, at least 15 to 20 minutes का walk. सुबह मुझे यहाँ बैठकर लगा था कि nothing can get as beautiful as this, लेकिन that was only until I witnessed a sunset sitting at the Blue Water Cafe. And once the sun went down, I walked back to the resort. In a while, we decided to leave for some drinks and dinner at one of the popular cafes, the Buddha Cafe. Telling where it goes, driving through days and nights, won't stop for traffic lights. A beer, some pizza, the owners at Goofy Foot, and some newly made friends was the perfect way to end my first day at beautiful Varkala. If I will ever figure out where the road goes, even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Hello and good morning from Varkala, from Goofy Foot. Well, today is a very special day.
मैं जाने वाली हूँ आज सर्फिंग सीखने के लिए, जो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था कि यहीं पे सिखाते हैं. सो आई एम सुपर एक्साइटेड. मैंने अपनी लाइफ में सर्फिंग कभी किया नहीं है. सो या लेट्स गो. So Goofy Foot has two properties, one at Odayam where I am staying and the other one is at Edawa where I'm now headed to join the others staying there for a surfing lesson. We had a quick coffee, loaded the surfboards and off we went. The surfing lesson begins with some quick body warm-up and running, followed by acclimatizing to the water temperature, and then a surfboard introduction session where you are taught how to balance your body and do a pop-up. और कुछ प्रैक्टिस के बाद हम निकल पड़े to catch some waves. I must admit ये बिल्कुल भी easy नहीं था खुद को बैलेंस कर पाना, लेकिन what seemed like 100 face falls later, I finally managed a proper pop-up. It's been an amazing first day surfing out here with all these wonderful people. And that's Sky. Yes, hello. It is so good. She's a pro surfer, by the way. She's been surfing since the age of 12. Oh my god. But not as skilled, not as skilled. No, she's really good out there. So alright, so now we're just headed back to take a shower, get Yeah. ready, and then we head out for breakfast. So Yeah. see you. After the session, Sky dropped me back at Goofy Foot and after a quick shower, we left for breakfast. If you're in Varkala, then definitely try out Inda Cafe. It has a beautiful vibe. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. It's also the only cafe that does Turkish coffee and the breakfast meals are so good. If I will ever figure out where the road goes. The cafe is run by 3 Ukrainian friends that you can see here and it is a definite recommendation from me. My highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. After some breakfast, Shafi and I left another beautiful location that I wanted to visit. तो अभी मैं एक जगह पे आई हूँ जिसका नाम है द कापिल बीच. तो इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ पे एक बीच भी है और एक लेक भी है. तो कापिल लेक meets the Kapil beach, which is right in front of me, and it's a very beautiful picturesque sort of a place. You can come here and just chill for probably like a sunset or like take a lot of pictures. It's a very beautiful place. So let me show you around. मेरे सामने I can see the lake and then I can see even the beach. It's a gorgeous place. So let me show you guys this place in 3, 2, 1.
And after being dropped back at the resort, I decided to just sit by the ocean for yet another beautiful sunset today. In the night, Rijas and Sky, the owners of Goofy Food, decided to throw us a barbecue party in their lawn. No telling where it goes. We were making some cocktails for everyone and this happened. Yes. Well, camera ko vodka mein नहलाने के बाद, we are back to enjoy the most amazing dinner put together by Rijas. The doggies, the humans, all had a blast that night और इसी के साथ I come to an end of my Kerala series. I hope you enjoyed the journey with me all the way from Wayanad to Varkala. Stay tuned for more content from a new destination soon. Until then, goodbye.